यो व्हाट इज गोइंग ऑन गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। एंड यार आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वेपन गाइड के बारे में। आई एम गोना टेल यू व्हाट वेपन्स यू शुड प्रायोरिटाइज फर्स्ट इन द गेम सो दैट आपका प्रोग्रेस काफ़ी तगड़ा रहे एंड यू डोंट गेट स्टक एनीवेयर इन द गेम। सो एज यू कैन सी ये मेरा दूसरा अकाउंट, आई मेड अ न्यू अकाउंट बिकॉज देयर वर सम मिस्टेक्स दैट आई डिड। इवन दो मेरा वो अकाउंट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। आई हैड 2 SSRs इन द फर्स्ट रीरोल एंड उसके बाद वी गॉट अ लॉट ऑफ SSRs, but then I tried and kept on rerolling around 10-20 times and in the end I got another perfect account which I'm gonna show you. तो ये दूसरा account है मेरा, this is my second account. So here I got Min Byung-gu in the first SSR random वाला, and in the rate up banner I got Choi Jong-in. So that was really good. First pull में दोनों मेरे निकल गए, so I took this as a win-win and I progressed with this account. And उसके बाद Min Byung-gu मुझे एक और मिल गया स्टैंडर्ड बैनर से, and this is really good. Let me tell you why. Because अगर हम इसके ascendant advancement में देखेंगे तो because of his first advancement, where can I show this to you guys? Where can I see his advancements? Okay. So what he gives is all team members crit hit rate and crit hit damage increase by 8% and increase to 12% for light team members. So basically I have Baek Yeonwoo जो मुझे मिला बाद में. So he is a light type damage dealing character, so he will get 12% crit rate and crit damage from when being in his team, right? Min Byung-gu के साथ टीम में होने पे बेक योनहू को मिलेगा 12% एंड बाकी कैरेक्टर्स सच एज चोई जोंग इन को मिलेगा 8%. नाउ आई हैव 3 SSRs, सो आई एम डन विद इट, बट आई नीड अ डिफरेंट SSR फॉर अ डिफरेंट एलिमेंट एंड नेक्स्ट आई एम गोना बी हंटिंग फॉर दैट कैरेक्टर ओनली एंड दैट इज गोना बी I guess Lee Bora or no Seo Jiwoo or most probably Emma Laurent. Even though I have a fire type, I want one more fire type because that would be really good. Dark type में Lee Bora will come really handy, but I will wait for another dark type because Lee Bora मेरे first account में था and it was not that fun. Now coming to the weapon guide जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. So I also pulled a SSR weapon here for Sung Jin Woo. दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न वाई ये अकाउंट मेरे पिछले अकाउंट से बेटर है बिकॉज देयर आई डिड नॉट हैव एनी SSR वेपन फॉर संग जिन वू बिकॉज आई वॉज क्लूलेस, राइट. मेरे को लगा कि आई मोस्टली प्रायोरिटाइज ऑन कैरेक्टर्स देयर, बट लेटर आई रियलाइज्ड कि जब मैंने इग्रिस से फाइट की आई वॉजेंट एबल टू बीट हिम एंड द बॉटल नेक वॉज द वेपन. सो आई चोज टू गो फॉर वेपन दिस टाइम अराउंड एंड आई विल गो फॉर अनदर वेपन. इवन दो हमें चैप्टर 10 के बाद एक साइथ फ्री में मिलता है बट इट इज़ नॉट दैट गुड, सो आई एम गोना गो फॉर अनदर वेपन हियर एंड ये गारंटीड रहेगा बिकॉज आई लॉस द 50-50 इन द previous SSR PT. So definitely we'll get a SSR weapon here and I'm hoping for demonic plum फ्लावर स्वॉर्ड फॉर संग जिन वू. दिस इज़ द बेस्ट संग जिन वू वेपन जो आपको चाहिए होगा. एंड वो जो गन मुझे मिला इट इज़ ऑल्सो रियली गुड बिकॉज इट इज़ अ रेंज्ड वेपन, सो दैट ऑल्सो कम्स इन हैंडी समटाइम्स. थेटिस ग्रीमोयर इज़ नॉट दैट गुड, मेनली फॉर द रीज़न बींग वाटर टाइप है, प्लस the effect is also not that cool. It interrupts the enemy. Additional damage equal to 10% of total damage taken, so you have to get hit in order to do more damage. So that is the reason why Thetis Grimoire उतना अच्छा है नहीं. And Demon King Longsword is really good, but स्लो है डैमेज इससे एंड यू गेट अ शील्ड रादर देन एनी डैमेज इंक्रीज एंड आई वुड लाइक टू गेट डैमेज मोर देन दैट. स्टन करता है एनिमी को विच इज़ रियली नाइस एंड इंक्रीज द यूजर्स अटैक बाय 8%, क्रिएट्स अ लाइटनिंग दैट डील्स अ डैमेज इक्वल टू 100% ऑफ द यूजर्स अटैक विच एक्टिवेट्स एवरी 10 seconds. So I guess yeah, Demon King's Longsword is also really good. Vulcan's Rage is also a good weapon, good enough weapon. So if I get any of these three, Thetis Grimoire मुझे नहीं चाहिए बट आई हैव केप्ट इट बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू गेट अ कैरेक्टर. आई वॉन्ट अनदर वेपन. शैडो साइथ हमें फ्री में मिलता है 2. हंट्समैन का मुझे कॉपी नहीं चाहिए. आई वॉन्ट अ यूनिक SSR, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग फॉर इट. इवन इफ आई गेट Thetis Grimoire डजंट मैटर बिकॉज SSR वेपन इज ऑलवेज बेटर देन SR एंड R weapons. ओके, सो नाउ कमिंग टू हंटर्स वेपन्स. या संग जिन वू के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं फॉर हिज SR weapons. ओके, सो इफ़ वी गो इन टू द वेपन्स, यहाँ पर आप SR वेपन्स देख सकते हैं. हैव अ लॉट ऑफ SR वेपन्स, ऑलमोस्ट सारे SR वेपन्स है मेरे पास. द स्ट्रॉन्गेस्ट SR वेपन्स आर गोइंग टू बी नाइट किलर बिकॉज यू कैन सी इट गिव्स टेलीकिनेसिस एंड पेनिट्रेशन को
2.4% से बढ़ाता है एंड स्टैक्स अप टू 10%. So for that reason Night Killer is a really strong SR weapon if you are going for an SR weapon, and Westwind is one of the strongest. इसके इफेक्ट में इफ सीक्रेट बुलेट हिट्स व्हेन देयर आर नो टारगेट्स विद इन 5 मीटर रेंज इंक्रीज द यूजर्स डैमेज बाय 75%, विच इज़ अ लॉट. ये फायर टाइप है और ये विंड टाइप है. सो फॉर दैट रीजन, एंड अगर आपको एक लाइट टाइप वेपन चाहिए तो यू कैन गो फॉर द लस्ट्रस ड्रैगन स्वॉर्ड बिकॉज इट गिव्स इफ द HP इज 80% एंड अबव, तो प्रोवाइडेड आपके पास एक स्ट्रॉन्ग हीलर है मिन ब्योंगू, सो यू विल गेट 8% ऑल अटैक इंक्रीज फ्लैट, विच इज ऑल्सो रियली नाइस. Even Demon King Spear is also really nice. You get Corrupted Spirit which removes the cooldown of Holy Spear. So basically ये skill को आप repeat में use कर सकोगे. And I guess damage काफ़ी high देगा ये आपको output में. And Baruka's Dagger is also really good. It increases the user's back attack damage by 30%. जब आप evasion करोगे तब आप Baruka's Dagger के साथ अगर damage कर रहे हो, it will increase the damage by 30%, which is also really good. Rock Golem Hammer is also really nice. It creates a shield, so if you want to go for a shield तो it's really nice. और increase defense up to 80% defense कर सकता है अगर आप इसका 1 star advancement कर लो, तो that is also really good. And Dark में Orc Broadsword is really good, Dark element में, because it's the only I guess right now dark weapon for Sung Jin Woo, so it will also decrease the cooldown by 8 seconds and increase the damage of Orc's Broadsword by 40%. तो ये जो base attack है इसको 40% बढ़ाता है. So for that reason it is also really good. You can also go for Kasaka's Weapon Fang, but the Venom Fang, but the problem is there is a 30% chance to inflict villainous sneak attack, which is a poison जो 0.8% every 3 seconds लेता है, which is not that good. But if you get a constellation here या फिर advancement if I say so, you will get a 30% chance to paralyze the target, so that is really good, or increase water damage by 8%. So for that reason it becomes really strong. So second advancement के साथ, so I got 2 copies of it, that's why I am equipping it. Otherwise I would have gone for other weapons such as Lustrous Dragon Sword या फिर maybe Westwind. So yeah. Now coming to Hunters, तो Hunters के weapon में you want to focus on the element type they are, नहीं damage type they are. For example, if they are attack focused, then you should go for the one which gives attack as the main stat. अगर वो HP focused है such as Min Byung-gu, you should go for HP focused weapon. एंड यहाँ पर आप देख सकते हो SR वेपन्स मेरे पास है. इवन आई हैव अ कॉपी ऑफ SR जो एडवांस किया है मैंने, बट स्टिल आई एम नॉट इक्विपिंग इट ऑन अदर कैरेक्टर्स बिकॉज आप देखोगे यहाँ पर जब आप R वेपन को, विच इज़ वेरी इजी, 5 स्टार करके 5 और उसमें कॉपी डालते हो, यू गेट अ एक्स्ट्रा 2% एवरी टाइम इंक्रीज द यूजर्स अटैक डिफेंस एंड HP. तो 5 बार करने से 10% प्लस इंक्रीज द यूजर्स वीकनेस एट्रीब्यूट डैमेज बाय 9%, ऑलमोस्ट 1 स्टार SR जितना स्टैट. तो दैट इज समथिंग विच वॉज रियली गुड. आप देख सकते हो 1 स्टार पे योर कोर डैमेज इंक्रीज बाय 9, यहाँ पर बेसिक अटैक बाय 12, यहाँ पर यूजर्स वीकनेस एट्रीब्यूट बाय 9 एंड यहाँ पर यूजर्स पार गॉज एक्विजिशन रेट बाय 24. तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 स्टार होने के बाद भी 16% है. इसको कितना एडवांसमेंट चाहिए रहेगा 24 बनने के लिए? 3 स्टार एडवांसमेंट चाहिए रहेगा. यहाँ पर आपको ये ऑलमोस्ट फ्री में वेरी इजीली मिल गया है. सो फॉर दैट रीजन आई एम यूजिंग दिस 3 वेपन ऑन माई SSR कैरेक्टर्स. Even though they are weapons, just because of these advancement stats जो उन्हें मिलता है, this makes up more than enough for 1, 2 or even 3 star SR weapons. So yeah, ये होने वाला है weapon guide. What are thoughts and opinion? And definitely focus on an SSR weapon on Sung Jin Woo, क्योंकि लेटर ऑन द गेम जब ये वाला मिशन आएगा जिसमें आपको इग्रिस को हराना रहेगा, नाइट कमांडर इग्रिस, it is gonna be really tough without an SSR weapon. And one of the good things जो हुई है मेरे साथ, even though I didn't want the gun, it is a light type weapon, तो इसका डैमेज हायर रहेगा अगेंस्ट नाइट कमांडर इग्रिस. सो दैट इज really cool. So yeah, with that इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं. I will post a video on my clearing of Igris in this account. Previous account पे मैं कोशिश कर रहा हूँ, but it is really tough because of lack of resources. Second, poor management of resources. Third, lack of SSR weapons. And yeah, so for that reason चलिए इस अकाउंट के साथ ही अब हम कंटिन्यू करेंगे. एंड I'll see what I'll do with that account. मे बी उसको मैं टेस्टिंग के लिए रखूंगा. सो या विद दैट इस वीडियो को पेंट करते, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, टेक केयर, बाय, अराइज.